बिरसा मुंडा आदिवासी समाज द्वारा भव्य रैली का आयोजन। आदिवासी संस्कृति की झलक से गूंज उठा बारडोली। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बारडोली में बिरसा मुंडा आदिवासी समाज द्वारा एक भव्य एवं अनुशासित रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से समाज ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करते हुए अपने हक और अधिकारों की शांतिपूर्ण मांग की। रैली की शुरुआत सुबह बारडोली स्थित ऐतिहासिक स्वराज आश्रम से हुई। पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में सजे युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने ढोल नगाड़े की गूंज और जगगीतों के साथ नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मार्च निकाला। आदिवासी नृत्य, गीत, संगीत और रंग बिरंगे झंडों से सजी यह रैली पूरे शहर का ध्यान आकर्षित कर रही थी। रैली में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए थे, जिन्होंने आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की तस्वीरों और नारों के माध्यम से अपनी एकता और संस्कृति गौरव को प्रदर्शित किया। रैली का समापन मामलतदार कार्यालय के समक्ष हुआ। रैली के पश्चात समाज के प्रतिनिधियों ने सरकारी योजनाओं में आदिवासियों को न्यायपूर्ण भागीदारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, जमीन के अधिकार तथा आरक्षण लागू करने से संबंधित मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन मामलतदार महोदय को सौंपा। समाज के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि यह रैली विरोध का नहीं बल्कि अपने अधिकारों का पहचान के लिए एक शांतिपूर्ण जागरूकता अभियान है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी समस्याओं को गंभीरता से सुने और शीघ्र समाधान करे। इस रैली ने बारडोली शहर में आदिवासी एकता, संस्कृति और हक के लिए एक सशक्त संदेश दिया है। यह आयोजन न केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, बल्कि यह आदिवासी समाज की जागरूकता और संगठित प्रयास का प्रतीक भी बना। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1992 થી વિશ્વ આદિવાસી દિન 9મી ઓગસ્ટે ઉજવણી માટે જાહેર કરવામાં આવ્યું। એ દિવસે દુનિયાભરના આદિવાસીઓ 9મી ઓગસ્ટની ઉજવણી ખૂબ આનંદ અને ઉલ્લાસભેર કરી રહ્યા છે। સરકારને આખા રાષ્ટ્રને એવું લાગે છે કે આ રાષ્ટ્રને સંસ્કારને બચાવવો હોય, સંસ્કૃતિને બચાવવો હોય તો આદિવાસી સંસ્કૃતિ એક એવી સંસ્કૃતિ છે કે જેનાથી સંપૂર્ણ રાષ્ટ્રને અને આજે ગ્લોબલ વોર્મિંગ ને એ બધી પરિસ્થિતિ છે એનાથી બચાવી શકાય અને તેથી જ એમણે 9મી ઓગસ્ટનું ઘોષણા કરી, જેથી પર્યાવરણ દિન આદિવાસીને જો બચાવવા હોય તો પર્યાવરણ બચાવવું પડે અને પર્યાવરણ બચે તો આખું રાષ્ટ્ર અને આખો સંસાર બચે। તે રીતે બારડોલીના આદિવાસીઓ પણ 9મી ઓગસ્ટની ઉજવણી ધામધૂમભેર કરે છે અને પોતાની સંસ્કૃતિના વાજિંત્રો, નૃત્યો દ્વારા અમે આ ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ। તેથી જઈને અમે પ્રાંત સાહેબને એક આવેદનપત્ર આપીશું। વર્ષોથી અમારા જે વન ઉકેલાયેલા પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોને અમે વાચા આપીશું। સરકાર સાંભળતી નથી, છતાં અમારા એવા પ્રયત્ન રહેશે કે ભાઈ વારંવાર અમે અમારા પ્રશ્નો રજૂ કરીએ અને તે રીતે મુખ્યમંત્રી સુધી પહોંચાડવાની અમે કોશિશ કરીએ।